for your time. Thank you so much. नमस्कार, संसद टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं बजट 2025-26 के आम बजट पर हमारी खास पेशकश, खास कवरेज। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, मिडिल क्लास, टैक्स पेयर्स और एमएसएमई समेत तमाम जो अन्य सेक्टर्स हैं उनके लिए कई अहम ऐलान हुए हैं। बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों पर खासा फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। सरकारी खजाने को भरने पर फोकस न होकर देश के नागरिकों की जेब भरने पर फोकस दिया गया है। उनकी बचत बढ़ाने पर फोकस रखा गया है। देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदार बनेंगे, ये बजट इसके लिए बहुत मजबूत आधारशिला रखता है। ये प्रधानमंत्री ने बजट पेश होने के बाद अहम बात कही है। सुधारों के लिहाज से इस बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। डिमांड आधारित ग्रोथ वाला बजट है।
नौकरी के नए मौके आएंगे, ये कहा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, स्टार्टअप पर फोकस किया गया है। किसानों को खासतौर पर लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की घोषणा की गई है। लगातार ये जो बड़े फैक्टर्स हैं, इन पर हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो बजट की घोषणा है, इनकी बारीकियां क्या हैं। हम समझ रहे हैं कि ये उपाय, ये घोषणाएं क्या आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव मजबूत कर पाएंगे? किस तरह से ये उपाय आने वाले समय में, इनका रोड मैप और किस तरह से इंप्लीमेंटेशन हमें दिखाई देगा, उसका क्या असर होगा? मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव जुड़े हैं। जी, और to understand the nuances of this budget properly, we are joined by to our extreme right is Professor Surendra Kumar. He is from the Delhi School of Economics, and to his left is Dilip Mitra Chinoy, Chairman Bharat Web3 Association and former Secretary of Secretary General of the FICCI. And we are expecting to join by Richard Wakey, former Secretary KPMG through Zoom. बिल्कुल, तो तीनों मेहमानों से हम समझने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर से जिस तरह से टैक्स से जुड़े एक्सपर्ट और साथ ही फिक्की की कमान संभाल चुके और वेब 3 को देख रहे इस समय हमारे साथ दिलीप चिनॉय जी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब से हम समझेंगे कि क्या बता रहा है, आखिर किस तरह का अर्थशास्त्र पेश कर रहा है ये बजट। लेकिन पहले मैं अगर आप ही से शुरुआत करूँ दिलीप चिनॉय जी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जिससे मूव करते हुए अब भारत कहीं ना कहीं डिजिटली लीड करने की कोशिश कर रहा है, और आज के दिन जब हम टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो ये सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए यही भविष्य है और यही प्रेजेंट है। ऐसे में जो घोषणाएं टेक्नोलॉजी को लेकर, एआई को लेकर, या फिर मैं कहूँ डिजिटली और रूरल एरियाज़ को, रिमोट एरियाज़ को मजबूत करने पर की गई हैं, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? तो अगर आप डिजिटल का देखें और रूरल इंडिया का, तो एजुकेशन को लेके 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं। पहले जो है ये एक एआई इन एजुकेशन का एक सेंटर बनाएंगे। पिछले बजट में उन्होंने हेल्थ और एग्रीकल्चर का बनाया था, तो वो एग्रीकल्चर भी कृषि क्षेत्र में एआई को कैसे इस्तेमाल करे, उससे क्या बेनिफिट्स है। सेकंड जो उन्होंने अनाउंस किया कि हर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी, और उन्होंने जो 3 बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो रूरल एरिया में टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे। एक तो जो उनका और ये पूरे बजट में ना इसको जोड़ने की एक आवश्यकता है। तो जो केवाईसी है, जो एरिया जो वहाँ के लोग को लोन देना या कुछ करने के लिए, तो केवाईसी उसको स्टैंडर्डाइज करके उसको अवेलेबल हो जाएगा। बजट के एक दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि जो आधार का जो है उसका भी प्राइवेट सेक्टर को एक तरीके से एक्सेस करने का एक मिलेगा। दूसरा जो पूरे गति शक्ति जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है उसको डेटा भी प्राइवेट सेक्टर को एक तरीके से मिलेगा, और उसमें जो रूरल इंडिया में जो वेयर हाउसिंग और वो उसका भी एक जिक्र हुआ था इसमें। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत इसमें है। जो भारत ट्रेड नेट जो कह रहे हैं उसमें भी जो मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो रूरल एरियाज में अलग अलग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है उसको एक नेट में ले आ करके और उनको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो अगर आप देखें हर सेक्टर में बहुत बारीकी से टेक्नोलॉजी का एक तरीके से उद्यान किया गया है। One question to you, Mr. Chinoy. At the time when the world is being blazed by AI and DeepSeek with $500 billion investments called for in the United States to counter what China has been doing, we have an allocation of what, 500 crore. So where do we stand a chance when we are countering United States and China in terms of AI? See, you talked about DeepSeek. DeepSeek, yes. Okay. DeepSeek did it at a fraction of the cost of OpenAI or NVIDIA, etc. If you go back in history, when India was denied supercomputers, we developed parallel processing to do our same function at a much lower cost of what was required. I think we should give this opportunity with what we can do. India, as we are a low-cost, high-efficiency country, and स्पेस सेक्टर्स का बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, चंद्रयान एंड नाउ द प्राइवेट सेक्टर। और एक बात और है इसमें दिलीप चिनॉय में चाहूंगी, क्योंकि कुछ आशंकाएं इसको लेकर भी हैं कि अब चाइना से जो खबर बाहर निकलती है, वो चाहे हम उसके बजट को लेकर ही कहें
वो कितनी ऑथेंटिक है, इस पर भी कुछ सवाल होते हैं। तो ऐसे में किस तरह का पोटेंशियल आप देख रहे हैं एआई में? नहीं, एआई में भारत के लिए देखिए हमारे भाषणी प्रोग्राम है। देखिए इंडिया को आप एक कंट्री नहीं ले सकते, हम अलग अलग देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन में अलग अलग भाषा है, अलग अलग। तो ये पूरा जो भाषणी प्रोग्राम है जो, और एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर और एजुकेशन 3 फाउंडेशंस है, इसमें अगर हम निकालें उसमें नेशनल ब्लॉकचेन पॉलिसी भी है। इसमें जिक्र नहीं होता है इस बजट में, खाली ब्लॉकचेन पे कोई टैक्स लगाया गया है, वो दूसरी बात है। तो एज डिजिटल, हमारा जो डिजिटल स्टैक है, हेल्थ स्टैक है, फाइनेंस स्टैक है, ये देश भर में मशहूर है। हमारा यूपीआई जो सिस्टम है वो पूरे globally it's known. So we are ahead there, but we have to do much more work to make it more useful for the last person in the queue. Okay, Professor Kumar, the finance minister talked about 4 basic engines of growth, that agriculture, MSME, investment and exports. Agriculture, we all know that basically India is an agricultural country, and we need to be doing much more research in to increase our productivity in agriculture also. Where do you see the investment climate being furthered with this budget? What I mean to ask is how are we progressing on the scale of to attract more investments, so that after all it has to be industry that takes a large section of population to living standard of beyond the dollars that we talk about, from $2,500 to a Viksit Bharat of around say $12,000. Okay, so in this light from 2,500 to 14,000. Yeah. That means for this next 20 years, we need around 8% annual growth rate. And in this year, there are this indication that growth rate is slowing down. As the survey is saying that in this year, 24-25, the expected growth rate is 6.4. So we need to push the growth rate. That's one. Similarly, secondly, we can say we don't just want a high growth rate, but this growth rate be accompanied by productive employment. For the product, not just employment, but productive employment. And for the productive employment perspective, what we see that large population, that's in the agriculture sector and MSME sector. These are the 2 large sectors. And here in these 2 sectors, especially when agriculture grow at a higher rate, then the population from the agriculture sector come out in non-agricultural activities. So that's why to bring out the population from the agriculture, we need to focus on the agricultural growth. So that's why this budget is focusing on that. Especially you can say like this Makhana board. Okay. These kind of unconventional sectors which can create a large demand, large export opportunity, large domestic demand that can be created by that. So in that way it will give the push. Similarly in the agriculture sector, this Dhan Dhanya scheme, these kind of schemes are supposed to give a boost to the agriculture sector. Similarly in the MSME sector, in this budget what we are doing is, because most of our small scale farms, they have these local markets, their demand is low and they are not able to grow. That kind of scenario is there. In that scenario, this budget is giving push to the domestic demand by lowering these income tax rates. It's giving money to the people. People, if we, as in the budget, they said that there is around 1 lakh crore in this personal income tax they have to forego. And if we say simply that this marginal propensity to consume is 0.75 or 0.8, that means this multiplier factor will be 4 to 5. And as a result, consumption growth will be 5 lakh crore. So that will give push to the growth rate around 2% or so in the economy. And second side is government is talking about this regulatory framework. They wants to get out of the business. They wants to give more opportunity. That's the intent of the budget, that this sector should grow it. So in that way, and thirdly, this external sector, this export sector, there they are talking about making this export mission. They are talking about, as Mr. Chinoy was talking about this Bharat net
Bharat Trade Net. So these kind of steps will create domestic and external demand that will give push to the economy, and we will be able to achieve, that's our intention, to get this target of 12 baht by 2047. You had to add something. No, Rajiv, I think, I think the finance minister in the beginning of this budget actually spelled out the government's vision of Viksit Bharat. It doesn't talk about the per capita income. It talks about zero poverty. It talks about 100% goods education. It talks about access to high quality healthcare, 100% skilled labor, 70% of women economically employed, and India being the food basket of the world. So once you look at the actual targets and you look at this, then that leads to whatever GDP numbers, per capita GDP numbers were there. So this is the first time, I think, the government has actually focused and defined their vision, and it says encompasses, so they can always add somewhat more to this. बिल्कुल। रिचर्ड रेखी हमारे साथ जुड़े हुए। रिचर्ड, आपका स्वागत और शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। रिचर्ड, जिस तरह के टारगेट की और विजन की बात कर रहे हैं, एक बात जिसका जिक्र लगातार हुआ और कहीं ना कहीं जब बजट सत्र की शुरुआत हुई, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि लक्ष्मी जी की कृपा गरीबों और मिडिल क्लास पर बरसे, और इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि टैक्स में छूट को लेकर इतना बड़ा ऐलान किया गया हो। इसका थोड़ा इकोनॉमी, अगर इसके जरिए हम अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करें तो कहा यह भी जा रहा है कि इतनी बड़ी चीज जो छूट दी गई है अब 12 लाख रुपए तक, उसका कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ का सरकार का नुकसान उसके खजाने पर पड़ने वाला है। इसके पीछे का अर्थशास्त्र कैसे काम करेगा, कैसे ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, खर्च करने की जो कैपेसिटी है लोगों की वो कैसे बढ़ेगी, थोड़ा इसके पीछे का अर्थशास्त्र अगर आप हमें समझाएं। Thank you, Preeti, for inviting me. And I think this tax exemption up to 12 lakhs is very big. Even the further, if you see, the slabs have also been changed. Even the highest slab has been reduced. So there is going to be a lot of money available for consumption. As we know, India has been going through hit on the consumption the last 1 year or 2 years. Consumption has fallen. In fact, I was talking to an FMCG CEO, very big one, and he was saying they had single-digit growth, first time. And I think this additional money coming into the hands of people will improve the consumption. One is consumption, okay? That will also increase the production in the factories. It will create more employment. It will create overall kind of situation. But the one point that I want to, so this is definitely a very big boost for consumption, very good, big boost for additional manufacturing, more capacity utilization, possibly more investments into industry also. But I think a very big point I want to put out here, and I don't know, Dilip, how you think about it. India can actually become a manufacturing hub on the low cost manufacturing, maybe supplying to countries like China, etc., where the labor cost has gone up. I think this will create a huge amount of employment for the low skilled workers, and will also improve our employment. You see, this budget has a challenge on how the employment is going to be addressed, because the employment issue is a big issue. And I do not know how many people have realized, but it's just not people who are not losing their jobs, it's also the recruitment has slowed down slightly. So we need to bring that up, and that can be done through the GCCs. India has become the GCC capital of the world, and even we're getting more GCCs. NASSCOM reports another 600 GCCs coming in. So this will create in its own way a lot of employment. So I think this money in people's hand, more money in people's hand, is definitely more savings, more consumption, and also more investments. Richard, Richard, I wanted to know, the finance minister also talked about making India a toy hub of the world. What is the potential that is in that industry? Which one? Which industry? Toy hub. She talked about toy hub, made in India, sustainable toys. So I'm sorry, I'm not getting which hub. What hub did you say? Toy. I'm sorry. Toy industry. He's talking about toy industry.
बिल्कुल ठीक है। हम खिलौनों को लेकर, एक टॉय इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा पुश लगातार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि जो चाइना का मार्केट है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में टॉय इंडस्ट्री को लेकर उसका कब्जा है। मैं थोड़ा दिलीप चुनॉय जी से समझना चाहूंगी, टॉय इंडस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा पुश होगा, और ये इसी बजट में नहीं है, पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा कोशिशें की गई हैं। हालांकि पीआईएल को लेकर भी उम्मीदें थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई है। टॉय इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल आपको दिख रहा है? भारत क्वालिटी के, खास तौर से क्वालिटी पर ध्यान देकर, और जो टॉक्सिक खिलौने हैं उनका जो असर रहा है, इन दोनों पहलुओं पर कितना पोटेंशियल भारत में, और बजट से कितना? She also talked about our toys being sustainable, so that means it has to be, environment friendly. I think there are three issues which have been raised between the two of you. The first is the safety and the toxic colors, etc. of other toys. For that, I think the Ministry of Commerce and the BIS have come out with quality control orders. This is 2 years old, etc. And that is being addressed. The second thing is that if you look at the toy market, global toy market is going to be $230 billion by 2028, right? In India, right, it is expected to grow to about 4.4 billion. A majority of our toys were imported, right? Actually, FICCI was pushing for this toy to be included, जैसे आपने कहा था PLI स्कीम में इंक्लूड करने के लिए। FICCI का बहुत ही प्रयास था, क्योंकि उस टाइम PLI स्कीम्स अनाउंस किए गए थे तो इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते थे। तो इसमें स्टेट्स ने, कई कर्नाटका ने एक तरीके से उसमें एक एडवांटेज किया है। तो ये एक, और इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, और चिल्ड्रन यहाँ पे है, और यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में और मिनिस्ट्री ने एक इंडियन टॉयज़ का एक तरीके से एक बड़ा सा कैटलॉग बनाया था और डायरेक्टिव बनाया था। और इंडियन टॉयज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट है। तो टॉयज़ भी लेबर इंटेंसिव है। तो तीन जो सेक्टर्स थे, तीन सेक्टर्स जो इसमें, शिप ब्रेकिंग भी लेबर इंटेंसिव है अगर आप देखें तो, फूड प्रोसेसिंग, टॉयज़ और लेदर, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। और इसमें खास तौर ध्यान दिया है, टॉयज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें एक हिस्सा है, और इंडिया को एक ग्लोबल सोर्सिंग हब बनाए। इसमें यहाँ पे लिखे हैं कि कई सेक्टर्स हम देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ DPIIT में एक स्केल कमेटी थी, तो इस बजट में एक जिक्र किया कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट करने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। अगर वो कमेटी स्केल कमेटी के द्वारा ऐसे फंक्शन करेगा, उनके चेयरमैन पवन गोयनका थे, उनको अभी पद्मश्री भी मिला है उस काम के लिए, तो ये एक बड़ा एक हो सकता है। और गांव-गांव में और अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। बिल्कुल, बड़े क्लस्टर्स पर तो ध्यान दिया ही गया है। अगर रिचर्ड, हम जो टॉय इंडस्ट्री को लेकर सवाल था उसका जवाब हमें मिल गया है। हम चाहेंगे थोड़ा आप टैक्स पर ही हमें और क्लियर करें, और साथ ही इंश्योरेंस को लेकर भी तमाम सवाल हैं। इंश्योरेंस में FDI कितना बड़ा कदम माना जाए, इस सेक्टर पर फोकस करना क्यों ज़रूरी था, आम लोगों के लिए किस तरह से ज़रूरी है? और इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं ULIP को लेकर भी, अगर मैं सही हूं तो, इसको लेकर जो कदम का ऐलान बजट में किया गया है, उसके असर को आप कैसे देख रहे हैं? I think this 100% FDI into insurance is a very, very good step, because as you know, insurance industry is all doing well, are very profitable. So all the international players have put in a lot of money into their joint ventures in India. Well, now, so you'll have a breakaway. You see, everybody is with a different Indian partner. So the possibility of increasing their shareholding closer to 100%, or some of them trying to go alone into this market. I think they've understood this market very well. It's a very big market. In fact, it's very good for the healthcare sector. Insurance should be linked not only with life but also with healthcare. So we can see a growth in healthcare also coming with more competitive schemes and other things coming out there for a automobile sector, the way the insurance sector will work. So I think this is a very, very good move, positive move. Insurance companies have tasted blood in India, they have tasted success, and they will want to grow it. As far as ULIP is concerned, as you will know earlier, there was a challenge as to, for the higher level, over 2.5 lakhs premium on the ULIP, it was being, there was a confusion as to whether it be taxed at their other income or what. Now they have clarified that it is going to be taxed as capital gains tax.
And so that clarification is very useful for the people who are investing into the insurance products. And as we know, the insurance products actually go into investments only ultimately. They're almost like mutual funds. So I think they have equated both the mutual fund and the insurance sector. So on the ULIP, it is also a good clarification that has come. But I think the insurance sector upscaling is very, very good for the Indian economy. We need our healthcare. You know, India is probably one of the few countries where not many people, a lot of people are uninsured, and especially the poorer lot. So hopefully this will give some fillip on that. What we have to understand is how are the Indian companies going to cope with this, because these the international companies will come flooded with their money and take advantage of this and also grow their market very much here. The market is big. Richard, how is it going to help the penetration of insurance? Because what we gather is in India it's hardly around 3 to 4%, and the international average is around 7 to 8%. So I think by increasing this, see the point is all these insurance companies need to see how they have to grow, right? They've got a particular capacity to which they have grown or they are growing. They will need to penetrate into the new markets. We have all seen success coming in Tier 2, Tier 3 cities and all other industries. So I'm sure the insurance sector will also go into this. So it will definitely enhance because it will also give ability for people to put more investment. The international players can put more money, they can go and invest. I can only tell you one thing from my experience in consulting last 40 years. I can tell you the international players are not short-term focused. They look at the long-term gains. When Pepsi and Coke came into India, they knew they were going to make loss for the 20 years, but they were looking at the market capture. Similarly, these insurance companies are making a lot of losses in the beginning, but now you can see them all becoming profitable. They're coming with innovative product. But I agree with you, the penetration is going to be, but we need that penetration actually, because so many people are uninsured in India. And I feel that these people will take advantage and grow, because as we know in many other sectors, money can be made at the bottom of the pyramid. So I'm sure they will look at those kind of opportunities and look at volumes which they could get. Yeah, thank you. Okay. Mr. Chinoy, the Finance Minister herself said that the government is going to forego around 1 lakh crore on income tax. But again, the target has what she has achieved this year. And again, the projection for the next year is even higher. So where does the two meet? Okay, so, this is our 8th budget. Mm-hmm. And if you were to statistically analyze all the 8 budgets, she has consistently got more revenue, tax revenue, than she has projected. Yes. So she has been using a very conservative method for tax revenue figures. But yet at the same time, again, goes back to your first question about use of technology, the use of this thing to ensure that there's more compliance. And, so I think she's very much focused on that. The second thing, and this is a challenge for her, because although GST collections have gone up, the share of the center has more or less remained stagnant, if you look at the way. Now, if this actually boosts consumption and you have greater GST, through that, so you might add somewhat to the indirect taxation there. And I think her calculations and the finance minister's calculations and the government's calculations have been very conservative and exceeded. And it is not through rigorous enforcement or whatever it is. I mean, if you're a taxpayer, you would file your return and you get a message that, 143(1)(a) done, this is the refund due, or this is what it is, this is okay. And there's no other thing. So the whole faceless system has encouraging people to comply. And then the whole digitization of the taxation is leading to compliance. So you will see that happening, and she keeps on lowering the rates, as Richard also mentioned. Even the higher tax bracket, they reduce the percentage, increase the limit. So it'll all happen in the new system when it kicks off. This will all happen. So I think it's fairly, and she's stuck to the, for the first time now, in the last few budgets, there was no glide path to the fiscal deficit, right? In this budget, they've actually provided a glide path, and this year is less than last year, 4.8 to 4.5. So you're seeing that happening in a very sustained manner. और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि टैक्स के रूप में पहले ही 20 लाख करोड़ रुपए जो हैं उसकी वसूली हुई थी, इसलिए वापस कहीं ना कहीं पैसा मिडिल क्लास को देने की कोशिश की गई है। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, टैक्स को लेकर मैं आपसे समझना चाहूँगी, बिल आएगा अगले हफ्ते,
जो टैक्स सिंप्लीफिकेशन है या एक पूरा रिफॉर्म मैं कहूँ एक तरह से टैक्स वाले रिजीम और टैक्स को लेकर देखने को मिलेगा भारत में, इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? और ख़ासतौर से जब टैक्स को लेकर कंपैरिजन किया जाता है, जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ या बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, तो भी ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लोगों में कम होती है कि क्यों हाई है, क्यों लो है, बाकी जगह क्यों अलग है। तो ऐसे में इस रिफॉर्म को आप किस तरह से देख रहे हैं? दैट्स ए वेरी बिग रिफॉर्म्स। इसके अंदर आप ये समझिए कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अंदर बहुत से अमेंडमेंट हो चुके हैं और एज ए रिजल्ट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, अभी भी जो हमारे लॉज का क्वेश्चन हम बात करें, नॉट ओनली जस्ट इनकम टैक्स अक्रॉस द, उनकी जो लैंग्वेज भी है दैट्स नॉट सो कॉमन मैन फ्रेंडली। तो इसलिए यहाँ पे जैसे जो टैक्स कंप्लाइंस की क्वेश्चन हम देखें, जैसे जैसे हमने ईज लेके आए उसके अंदर, एज ए रिजल्ट द कंप्लाइंस टैक्स इज इंक्रीजिंग और टैक्स रेवेन्यू भी उसका एज ए रिजल्ट इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए जो ये इनकम टैक्स रिफॉर्म की बात, नए एक्ट के लाने की बात है, यदि हम इसको एक सिंप्लीफाइड वे में लेके आते हैं जिसको एक कॉमन पर्सन समझ के ईजिली कंप्लाई कर पाए, तो एज ए रिजल्ट न कि कॉमन मैन को एक ईज मिलेगा, इवन द गवर्नमेंट रेवेन्यू विल इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ दैट। बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है 600 से अब 60 पन्नों पे सिमट आएगा सब कुछ। तो ये रिफॉर्म कहीं ना कहीं आम लोगों की समझ में भी आएगा। इसके बाद रिचर्ड, अगर मैं ओवरऑल बाकी सेक्टर्स की भी बात करूं या बाकी बजट की मैं बात करूं, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग में जो पोटेंशियल हमारा है, लगातार हम उस पर बात कर रहे हैं, वो हम कहीं ना कहीं अभी मीट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत पोटेंशियल है भारत के अंदर जिसे हमें देखना है। ऐसे में जिस तरह के ऐलान आज बजट में किए गए हैं, आपको क्या लग रहा है, कुछ और उम्मीदें और थी या जो कुछ किया गया है अभी समय के हिसाब से वो काफ़ी है और उस पर ही, उसी रोड मैप पर आगे बढ़ना चाहिए सरकार को? So basically, Preeti, this budget is a very positive, progressive, growth-oriented budget. Okay, so I think a lot has been put into it. We can't expect miracles from one budget, right? It'll happen over a period of time. But I would just like to put one point in the government to focus on. We keep talking of ease of doing business, and we keep talking of manufacturing sector. There are two issues there and two challenges which not very difficult to do. One is to relook at the regulatory environment, because there is huge regulatory issues for people who get into manufacturing. And I would also include the toy industry into that. I know I didn't understand it, but I got it later when Dilip spoke. But I think we need to have a regulatory environment, and we also need to see how we can make the ease of doing business real on the ground. I think these are two issues. They're not very difficult actually. It is about having trust into our business leaders and giving them that space to actually operate their companies instead of dealing with the regulators. If people dealt with their business, I think we would go far. And I would still once again like to, when you're talking about manufacturing, I would say China has a huge issue on those skilled workers. We should use it to create employment, and it will also help us in our own growth. Exports also will be dealt with. Our balance of payment in China also will get offset to some extent, I think, or with other countries also. So I think we should look at that, and we should create these large manufacturing hubs where people can actually manufacturing hubs, and we should bring the cluster approach in manufacturing. So we're doing tire industry, all tire industry should be together, which is the success of China. So maybe some of those points we can take and move on. And then why not in manufacturing use artificial intelligence? I know earlier the question was asked, should we have put more money into artificial intelligence? We could have developed we could have developed the same AI what China has developed. But and I think we've got very smart engineers sitting here, and we can do it. And as Dilip had said, at a fraction of a cost, at some $6 million, they developed that, and they shook up the US market. And this is only the beginning. So actually, India can have a huge role to play. India can have a huge role to also play in AI services. I think that is going to be a big play that we could look at. And this should be put onto the manufacturing sector to enhance it and to improve the production out there. Yeah, thank you. आप दिलीप कुछ ऐड कर रहे थे हो, क्योंकि एक्सपोर्ट की बात की उन्होंने, एक्सपोर्ट को लेकर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को आप कैसे देख रहे हैं? और क्योंकि लगातार हमें कहीं पे भी हम बात करें जो व्यापार घाटा है
उसको तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखना ही होगा जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपोर्ट बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं बजट के अलावा? तो आप देखें ना, ये पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे में आया था उसमें ग्लोबलाइजेशन इज डिक्लाइनिंग, उसमें एक तरीके से एक पूरा प्रेजेंटेशन था। और इस बजट में काफ़ी एक फोकस है एक्सपोर्ट्स पे। एक्सपोर्ट्स का जो इन्होंने पहला जो किया है, इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज हमारे मिशंस बन करके एक तरीके से कोलैबोरेट करेंगे कि हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं। दूसरा जो है, एक इसमें जो एक प्रोग्राम अलाइन किया गया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, मैंने पहले भी जिक्र किया था जब पहले हम बात कर रहे थे, इंडियन कंपनीज को कैसे इंटीग्रेट करें। तीसरा जो है, जो हमारे जो टॉयज़, लेदर और फूड प्रोसेसिंग और मरीन प्रोडक्ट्स और शिप बिल्डिंग वगैरह, जिनमें इसमें जो दिया है, सारे एक्सपोर्ट फोकस्ड है यहाँ पे करके। और जो नेशनल ट्रेड नेट है और एमएसएमईज़ के लिए, क्योंकि एमएसएमईज़ के लिए खास तौर एक था जो उन्होंने जो टर्नओवर लिमिट और इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाया है, तो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए उसमें जो फ़ायदे आते थे उनको जो नहीं मिल रहे थे और ग्रो करने के लिए एक तरीके से रुकावट थी, मेंटल बैरियर था, वो भी निकल जाएगा। और वित्त मंत्री ने ये भी ऐलान किया था कि जो 43% एम्प्लॉयमेंट है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स एमएसएमई से आता है। तो ये मल्टी एक तरीके से एक चैलेंज यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अगर आप एक और चीज़ है जो लोअर लेवल पे या मरीन प्रोडक्ट्स पे जो उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी किया है और वैल्यू एडिशन करने में एक उसका एक फोर्थ लेग है अगर आप देखें एक्सपोर्ट्स में। तो इसमें एलोकेशन तो खास नहीं है, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए है। और पहले जो सवाल जो आपने किया था, Richard, in this budget you might have missed it, but they have announced a committee to look at coming on reforms or doing ease of doing business, and they have to come up with the recommendations in 12 months, right? And this is an opportunity for firms such as yours and for industry organizations and industry to put forward the suggestions so that we can address the whole ease of doing business here. I think that's an important aspect that we need to look at going forward. And there are other things in the ease of doing business which is announced in different parts of the budget, but there are actually 14 points on ease of doing business in this budget. बिल्कुल, कुछ और पहलू हैं जिन पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 जब पेश किया तो उन्होंने क्या बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष में सबका विकास के दृष्टिकोण को वास्तविक रूप देने के लिए एक विशिष्ट अवसर हमको मिला है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात भारत की विकास यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया। Viksit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Viksit Bharat. The destination is, for the Finance Minister, Viksit Bharat by 2047, and energy sector is going to be very critical to that. And Professor Kumar, if we talk about energy, she talked about 100 gigawatt of nuclear energy by 2047. Besides that,
energy requirement for India is going to be increasing day by day. How do we tackle that? And as far as the solar energy is concerned, we know that we have to import a lot of raw material, everything regarding solar energy. What is being done and what is being proposed as to that in the further years, that we are energy efficient in that sense? Okay. So on this energy front, of course, our demand is going to increase multiple times in the coming years. And this demand we cannot meet using the conventional fossil fuels. We have to be environmental friendly, climate change mitigations, because India is the third largest energy consumer. So that's why we have to meet our energy demand in a sustainable, renewable basis on that. So given that scenario, what we can say in the current budget, one announcement they make of this 100 gigawatt of nuclear energy. That's a very big announcement. Because this nuclear energy, that's the emission free. So we can meet this objective of lesser or means this 2070 by 2070 zero emissions. There this will play a big role. Then about this other renewable energy, solar, as you said that our dependence much more is up for this, you can say, raw material for that or the equipments for that. We are dependent more on the China at present. So a couple of days before, the government announced policy for these rare minerals in that. And these rare minerals, they can play a big role in developing domestically producing this equipment, this renewable technologies in that front. But here, as the survey is pointing out, these renewable energies, or you can say this new tech sectors, they are also energy intensive, water intensive. So that's why we need to find a balance. And here we just not to create more energy, but to meet our energy demand, we also need to focus more on energy efficiency. So in this last 20 years or so, we are having, we can say, one of the best front where we are growing is the energy efficiency. About 1/3 of our energy requirement could be reduced due to energy efficiency, and there we can say these policies like this earliest government announced, and that is continuing with that, this PAT scheme, this emission trading schemes that we announced. All these kind of schemes will help us in getting energy efficiency on that front. दिलीप, आप क्या इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि एलोकेशन 53% बढ़ा जब हम एनर्जी सेक्टर को लेकर बात करें और लगातार बढ़ रहा है। फिस्कल ईयर 21 से अगर हम देखें तो 900 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है, एलोकेशन बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह के कुछ और बातों का जिक्र अभी प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि कहते हैं ना, पानी पे वर्ल्ड वॉर हो गई, कि एनर्जी भी ऐसा सेक्टर है जिसमें तगड़ा कंपटीशन भी है, तगड़ी डिमांड है, आगे ये समय के साथ लगातार बढ़नी है। तो बजट में तो बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, बाकी आप क्या इसमें सुझाव देंगे कि किस तरह से इसका आगे क्रियान्वयन किया जाए? तो इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए, तो इस बजट में क्लीन टेक जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, उसमें क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग पे उन्होंने एक पैरा डाला है। उसमें अगर आप देखें, जो प्रोडक्ट्स जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रोलाइजर्स, ग्रीन हाइड्रोजन अगर आप देखें तो हाइड्रोजन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट और ग्रिड स्केल बैटरीज। क्योंकि अगर हमें सोलर एनर्जी यूज़ करना है या रिन्यूएबल एनर्जी करना है तो हमें आरटीसी राउंड द क्लॉक चाहिए होता है, उसके लिए हमें एक स्टोरेज का एक फैसिलिटी है। तो इसमें एक पूरा एम्फोसिस है हमारे मैन्युफैक्चरिंग मिशन में। दूसरा, अगर आप देखें तो 2030 तक हमें लगभग हर साल 50 मेगावाट से ज़्यादा इसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 500 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 तक, उसके लिए हाँ भाई तब 200 कुछ के ऊपर है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो इंट्रा स्टेट और स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, क्योंकि उसको अगर आप प्रोड्यूस करोगे पावर परचेस एग्रीमेंट में, उसको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, तो इसमें एक पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में एक पैरा है, उसमें बड़ा अच्छे से वित्त मंत्री ने कहा है कि we will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states। प्रोफेसर साहब भी यही कह रहे थे कि हमें ये, और उनको
फाइनेंशियल हेल्थ और कैपेसिटी के लिए उनको 0.5% ऑफ GSDP विल बी अलाउड टू स्टेट कंटेंजेंट ऑन रिफॉर्म्स। तो ये उनको एक फिस्कल इंसेंटिव दे रहे हैं, आप रिफॉर्म्स करो। और ये जो 3 चीज़ होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और स्टोरेज। तो तीनों एरियाज में इस बजट में फोकस दिया गया है। और ये आगे जाकर के आप और भी देखेंगे, जो PLI सोलर सेल्स में तो PLI स्कीम था ही, राइट। प्रधानमंत्री ने मतलब पिछले वर्ष के बजट में शायद था वो सूर्य घर योजना, जिसके कारण मतलब लेकिन उसके लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वी नीड टू बिल्ड दैट। दैट इज व्हाई द स्टेट्स हैव टू बी इंसेंटिवाइज्ड। सी दैट इज अ बेटर स्कीम देन गिविंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल। और क्योंकि आपने स्टेट का जिक्र किया है, आगे मैं समझूंगी कि जिस तरह से राज्यों की भागीदारी की लगातार बात हो रही है कि जब हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है, राज्यों की जो भूमिका है या उनका जो समन्वय है, सहयोग है, इंटीग्रेटेड अप्रोच अलग अलग मिनिस्ट्रीज में तो हम देख रहे हैं, लेकिन राज्य और किस तरह से और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बजट के एलोकेशन को लेकर हमने देखा ही है किस तरह से कहा गया है कि ब्याज मुक्त आप अगले 50 सालों के लिए ऋण लीजिए और काम कीजिए। तो राज्यों की भूमिका कैसी दिख रही है, वो एलोकेशन किस तरह से, इस पर मैं आपका कमेंट लूंगी। लेकिन एक बार एक रिएक्शन देते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पेश होने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। So from farm to fintech, from investment to consumption to disposable income, this budget focused on all areas. Talking about Viksit Bharat, how do you think it has laid a blueprint for it? I would like to congratulate Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister for coming out with a dream budget. This is an amazing budget. It has practically every sector has been covered in a very thoughtful manner. Every part of the economy, whether it is investment, whether it is manufacturing, whether it is productivity at the farm level, whether it is new opportunities for youth, whether it is technology, each and every sector has been covered in this in a very thoughtful manner. Education, healthcare, every sector has been covered. This budget will also be known as a dream budget because while giving all these benefits and while making such a big investment, the fiscal deficit has also been brought under control. The middle class families will be really benefited because up to 12 lakh annual income, there won't be any income tax. That means the families can now have better amenities at home, better facilities. They can spend more on the children, spend more on getting a better house. It's going to be a very good thing for the entire economy, I would say, and it will be a multiplier for the economy. So talking specifically about your ministries now, and I remember as a new parliamentarian, you've always been talking about the importance of entrepreneurship. And today, if we see the kind of announcements that we had for deep tech startups, the assistance for startups, how do you see the entrepreneurship ecosystem growing in India with this budget? It's a very important thing because entrepreneurs are the ones who give jobs, who create employment, who really put in their sweat and heart in creating some new solutions for the world, for the society. And that's why it's very important that the entire Startup India program, which has been a great success throughout the last 11 years, has now taken a new shape, new form, and the entire world is recognizing this. The deep tech community, which is where the current focus is on, that's where large number of new researches, new technologies are getting created, and they will define the course of the economy in the coming years. So that's why there is so much focus on getting the deep techs funded properly, getting mentorships for them, making sure that the tier 2 and tier 3 cities also get the opportunities. Just recently, we started a STPI in a very remote district of Odisha. So imagine that kind of approach our Prime Minister has taken. He believes that we should have the equal opportunities for everywhere in the country, and Prime Minister always tells us we must focus on democratizing technology. Democratizing technology means access to technology and access to research and access to the resources must be available across the country, not just in the few large cities or in the handful of entrepreneurs. So that's a very important approach, and that approach has really helped us. If you look at the AI mission, we have created a common compute facility. Common compute facility, the entire world is noticing it because investing government funds and getting the private investment with it and creating a 18,000 GPU
data center or series of data centers, compute facility, imagine the power it will give to our startups, to our entrepreneurs, to our researchers, to our academicians. They will be able to really use the best of the best compute resources for trying out their models, testing new algorithms, doing new researches, creating. So, I mean, that approach is very, very important. Absolutely, sir. And the word is navigating the labyrinth of AI. And why I say labyrinth, because there are merits as well as demerits. The Prime Minister always talks about the ethical use of AI. The budget also talks about creating a center of excellence for AI. How will that shape the ecosystem of AI in India? That will have a very major impact on the ecosystem of AI, because today the AI will be, the AI world will be driven by new research. New algorithms will come out, new algorithms which require much less compute compared to the older algorithms, which are much more efficient. Those will come out, and that will come out of research. That's why creating that center of excellence is very, very important. While we are very steadily focused on getting the compute, getting the applications, getting the foundation model, getting the talent in place, simultaneously, we must also have that futuristic research also going on. That's why the center of excellence is very important. So, finally, talking about railways, sir, the capex has remained the same, of course, but you've always maintained that the focus is going to be on safety of passengers and, of course, enhancing the capacity as well. What are the other areas, particularly talking about manufacturing also? Huge impetus to railway because of the high capital allocation, high capex allocation that has come in the budget. And I thank Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister for this. 2,52,000 crore rupees capital allocation. It's amazing. It's very big, very huge. And this will give us that momentum which is there in building new tracks, renovating the older tracks, getting new Kavach installed. 10,000 locomotives we are installing Kavach. Getting the electrification completed, it will become 100% this year. We will be manufacturing 50 new Namo Bharat trains for short distance, 200 new Vande Bharat trains for medium distance, 100 new Amrit Bharat trains, which are all for the low-income families, entirely non-AC. Those trains will be manufactured, 100 more. We are going to do 1,000 more flyovers and underpasses. 1,300 stations are already under construction, and we'll also be crossing 3 major milestones in the coming days. We'll become among the very few, just maybe 2 countries who carry more than 1.5 billion tons of cargo. We'll be crossing 1.6 billion tons of cargo this year. Second, we'll be crossing the landmark of achieving the landmark of 100% electrification. Third, we'll be crossing that milestone of 3 lakh crore revenue for railways, and doing all this while maintaining the affordability of railways. The subsidy given to passengers is of the order of 58,000 crore. 58,000 crore. That is the order of subsidy. Basically, if the cost of transporting is 100 rupees, ticket is about 50 rupees. That is the kind of subsidy which is being given. That's a social obligation. So while keeping affordable, and that is where the middle class gets the benefit from multiple ways, right? Absolutely. Metro, middle class gets the benefit. Better railway network, middle class gets the benefit. IITs get doubled, middle class gets the benefit. AIMS get doubled, the middle class gets benefit, right? Absolutely, sir. And your closing thoughts on the force multiplier or the multiplier effect of this budget on the overall economic growth of India? Huge force multiplier. See, investment is a major economic multiplier. Combine that with growth in demand, it's a huge multiplier. Third, laying the foundation for future by investing in productivity, investing in logistics, investing in research, investing in technology. So combined, if you look at this budget, this is a dream budget. This is a budget which really, really will help our economy grow in a very significant way. That's why it's a force multiplier. And I thank Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister for this great budget. It's a phenomenal budget. It's a dream budget.
तो हमने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुना, जिन्होंने बजट को लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दी है, और चाहे वो रेलवे की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, हर एक को लेकर उन्होंने बड़ा उम्मीदों भरा बजट इसे बताया है। रिचर्ड, अगर हम आपके ज़रिए समझे, एक स्टार्टअप का जो जिक्र किया गया है यहाँ पर, हम जानते हैं जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बदलती दुनिया की बात कर रहे हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी हो या फिर स्टार्टअप्स में हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, AI का जो हम जान रहे हैं किस तरह से आगे आने वाले समय में AI का हर जगह हमें असर दिखाई देगा। ऐसे में जो अपस्किलिंग है टेक्नोलॉजी को लेकर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कफोर्स हमारे पास काफ़ी बड़ी है, और स्किलिंग को लेकर जिस तरह से 5 सेंटर्स, नेशनल सेंटर्स का ऐलान किया गया है, ये कितना मददगार साबित होने वाला है? आगे आने वाले समय में कैसा असर इसका दिखाई देगा? Thanks for this. I think if you look at the budget, the whole focus has been on youth empowerment. One of the focuses on youth empowerment, and they have allocated enough money towards vocational training, skilling programs, startup support. I think we know that the Indian economy will grow with the startup as well as the MSME sector. Both provide huge amount of employment to the general masses. And I think with the focus on digital skills, AI, robotics, and also the education system, I think Dilip spoke about the Bharat net, laying out a broadband to schools, to health centers. I think this is going to be big. The issue which is going to come up, the opportunity which is going to come up, the youth will be trained on AI. Like I say, India can become the AI services capital of the world. And I think we should look at that and how we could be providing the services, and these youth who will get trained will find their employment there. So if you've got GCCs which are growing on one side, you will have these AI kind of services which will be really big. It could be as big as the GCCs as we go ahead, because the whole world is using AI. And the services will be provided by India because we've got good skills out here. We've got engineers, the maximum number of engineers come out of India. So we could look at that as another opportunity. So I would say you spoke about the 5 national skilling missions. I think they've opened up a lot of seats in IITs and MBBS, the 50,000 Atal tinkering labs. I think these are all important kind of things we need to look at. And so this is what my thing to your answer is. इसी के साथ जो ये चर्चा का समय वो यहीं पूरा हो रहा है। रिचर्ड रेकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही दिलीप चिनॉय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुछ तस्वीरें अब हम जाते जाते आपको दिखाएंगे। ये खास तस्वीरें हैं बजट से अलग। ये तस्वीरें आई हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से, जहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम में स्नान किया। उपराष्ट्रपति आज दोपहर प्रयागराज पहुंचे, जहाँ उन्होंने संगम पर स्नान किया, और इस बेहद खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आप देखिए तस्वीरें और मुझे दीजिए इजाजत। जय महाकुंभ, जय